बेटा आप लोगों की प्रेजेंटेशन भी नहीं आई थी मेरे पास, हेरा। माइक बंद करना। मैम, कैन वी स्टार्ट नाउ? श्योर, अल्लाह ताला का नाम ले लीजिए और स्टार्ट कीजिए। Bismillahirrahmanirrahim. This is Varisha Manzoor, Q108 from morning. Fourth year morning. Today our topic is definition and terminologies, in which we are going to cover biopharmaceutics, generic equivalents, therapeutic equivalents, bioavailability, bioequivalence, drug disposition, pharmacokinetics, and landmark. First of all, let me tell you what is biopharmaceutics. Biopharmaceutics can be defined as the study of how the physicochemical properties of drug, dosage forms, and route of rate and extent of drug absorption. बायोफार्मास्यूटिक्स में हम ये एग्जामिन कर रहे होते हैं कि जो इंटर रिलेशनशिप है हमारी ड्रग का, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, डोजेज फॉर्म और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है रेट को और एक्सटेंट को हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन के। फर्दरमोर, जो रिलेशनशिप है हमारी ड्रग का और डोजेज फॉर्म और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमें ये बताता है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारी कितनी ड्रग और किस रेट पर एडमिनिस्टर होगी। किसी भी ड्रग के इफेक्टिव होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी एक सफिशिएंट अमाउंट जो है वो एट द साइट ऑफ एक्शन पर मौजूद हो और वहाँ पे रहे तब तक जब तक वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एक्सर्ट कर सके। दिस इज डिटरमाइंड बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, the form in which the drug is administered, and the rate at which it is delivered. Please change the slide. Now we have a second slide in which the scheme demonstrating the dynamic relationship between the drug product, and the pharmacological effect is given. Ma'am, whosoever here is, please ask him. से मिलेगा, झमेला मिलेगा, अपना ठेला मिलेगा, तेरा चच्चा कांगना मिलेगी, अपना Can I start now? Sure, beta. So, in this diagrammatic presentation, it is given. Let's suppose a person or a patient have taken a drug. एक पेशेंट ने ड्रग ली है किसी भी रूट से, आया कि वो ओरल रूट हो, सबक्यूटेनियस हो या फिर इंट्रावेनस हो। जब किसी भी पेशेंट ने वो ड्रग ली है, बॉडी के अंदर वो ड्रग इंटर हुई है, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारी ड्रग रिलीज होगी और डिसोल्यूशन अकर होगी। जैसे ही डिसोल्यूशन अकर होगी हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी। वो एब्जॉर्प्शन आया या तो ड्रग हमारे टिश्यू के अंदर एब्जॉर्ब होगी और उसके अलावा ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होगी। व्हेन द ड्रग विल exceed the minimum effective concentration, the pharmacological effect will be produced, and furthermore the drug will be eliminated, excrete out, and metabolized. Please see in the slide. Furthermore, we are going to discuss what is generic equivalence and therapeutic equivalence. So for that, we first have to know that what is meant by equivalence. Equivalence is a comparison of drug product and another drug product, or relationship in terms of established standards of one product to another product. इक्विवेलेंस में हम ये देख रहे होते हैं कि जो हमारी एक ड्रग प्रोडक्ट है उसको कंपेयर किया जा रहा होता है दूसरी ड्रग प्रोडक्ट से एज पर गिवन स्टैंडर्ड्स। प्लीज चेंज द स्लाइड। So let's move towards the generic equivalence. In generic equivalence, a generic equivalence is a generic drug that has same active ingredient or therapeutic moiety as the same salt and esters in same dosage form as compared to another, but is made of by different manufacturers. जो भी जेनेरिक इक्विवेलेंस है उसमें हमारी जेनेरिक ड्रग का सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, थेरेप्यूटिक मोइटी सेम होती है, सॉल्ट और ईस्टर सेम होते हैं, डोजेज फॉर्म भी सेम होती है एज कम्पेयर टू अदर। बट जो हमारी ड्रग होती है वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से प्रोड्यूस होकर आ रही होती है। एज यू कैन सी इन द इमेज,
it is defined that we have a well-known brand name and an alternative brand name which have the same generic ingredients. So in a well-known brand name, we have astringent quality, as well as in alternate brand name, we also have astringent quality. But the well-known brand name is expensive because of high manufacturing cost, high marketing investment, and high retailer margins. As compared to this, we have alternative brand name, which is cost effective because of low manufacturing cost, low marketing investment, and low retailer margins. जो भी हमारे जेनेरिक इक्विवेलेंट्स होते हैं या पे थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट्स होते हैं, वो इस वजह से प्रोड्यूस किए जाते हैं कि जो भी हम मुताबिक ड्रग को खरीद सकें इकोनॉमिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग. Let's move towards the therapeutic equivalent. Please change the slide. What is therapeutic equivalent? Therapeutic, a drug that has the same pharmacological effect and action in the treatment of illness, and another drug, even though the drug may not be chemical equivalent. We have to focus in this line that the drug may not be chemically equivalent. थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट में ये होता है कि हमारी जो ड्रग है उसका सेम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होना चाहिए इन रिस्पेक्ट कि वो किसी भी इलनेस को ट्रीट कर रही हो सेम वे में क्लिनिकल इफेक्ट भी उसका सेम होना चाहिए और जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो भी सेम होनी चाहिए. एज इट इज रिटन, two medicines that have the same clinical effect and safety profile are said to have therapeutic equivalents. These two drugs, each from different manufacturer, are known to have nearly identical properties and can be interchanged as needed. अब हम for example ले लेते हैं एसिटामाइनोफेन. ठीक है, एसिटामाइनोफेन के हमारे पास दो आ जाती हैं. एसिटामाइनोफेन को हम पैरासीटामोल भी कहते हैं, जिसके लिए हमारे पास आ जाता है टेलिनॉल और उसके अलावा पेनाडोल. कभी भी किसी भी पेशेंट को अगर एज अ पेन रिलीवर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि कोई भी पेन रिलीवर आप ले लीजिए, तो जैसे ही वो पेशेंट किसी भी ड्रग मार्ट पे या फिर ड्रग स्टोर पे जाता है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. तो उसमें ये होता है कि जो हमारी ड्रग है उसकी कॉस्ट चेंज होगी बिकॉज ऑफ कि उसकी मार्केटिंग लेवल या फिर उसकी जो मार्केटिंग लेवल है या फिर कॉस्ट है वो कम हो सकती है, लेकिन जो उसकी थेरेप्यूटिक इफेक्ट होगा या फिर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा वो सेम होगा. ये हम इसलिए कर रहे होते हैं कि जो हमारे पेशेंट्स हैं जो उस चीज को ये कहने के अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो दूसरी ड्रग को उतने ही दूसरी ड्रग की उसी थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस या फिर ये कहने के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को हासिल कर सकें उनकी गिवन कॉस्ट में. ऑफ नोट्स कुछ FDA की तरफ से दिए गए हैं. दैट these off notes are: these drugs do not need to have the same appearance, flavor, packaging, release mechanisms, and minor aspects of labeling. These are preservative or release mechanism या फिर minor aspects of labeling same हो. That's all from my side. Assalamu alaikum. I'm Omema and I'm covering bioavailability. Bioavailability is a measurement of the rate and extent amount to which the active ingredient or active moiety becomes available at the site of action. Bioavailability is also considered as a measure of the rate and extent of therapeutically active drug that is systematically absorbed. बेसिकली बायोअवेलेबिलिटी वो ड्रग की अनचेंज फ्रैक्शन होती है जो हमारी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाके पहुंचती है. जब भी हम बायोअवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, बट जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो रूट का होता है कि हम लोग दो रूट के थ्रू हम अपनी ड्रग को दे रहे होते हैं. एक IV रूट होता है और एक ओरली रूट होता है. हम जब IV रूट के थ्रू कोई भी ड्रग देते हैं तो हमें पता होता है कि वो 100% हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आराम से चली जाएगी. लेकिन जबकि ओरली रूट जो होती है उसमें होता है कि वो हमारी स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर में जाके पहले मेटाबोलाइज करवाती है और उसके बाद वो हमारी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाती है. इसलिए सिर्फ 5 to 6% ही सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तक पहुंच सकती है. जबकि IV रूट क्या होता है कि वो 100% ही सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ड्रग हमारी पहुंच जाती है. इधर दो ग्राफ है. फर्स्ट ग्राफ बता रहा है कि जो हमारी ड्रग है वो हमारी मेनली हमारी
हमारी जब ड्रग की रूट ऑफ ड्रग की ऑब्जर्वेशन हो रही होती है तो वो मेनली हमारे ऑनसेट ऑफ द एक्शन के टाइम को इफेक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारे जो टाइम इफेक्ट है वो इंक्रीज हो रहा होता है। और जो दूसरा ग्राफ है वो बता रहा है कि जब हमारी ड्रग का जो मैक्सिमम इफेक्ट है वो ओवरऑल पहले एक्सपोज करवाएगा और उसके बाद वो ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन को कफ फॉर्मेशन करवा देगा। सेकेंड इज बायो इक्विवेलेंस। Bioequivalence is the biochemical products that share the same active ingredients and desired outcomes for patients. It means कि हम जो हमारी दो या दो से ज्यादा ड्रग्स हैं उसका सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है और उसका जो आउटकम निकलेगा वो भी सेम ही फॉर पेशेंट सेम आता है। Pharmacokinetic study must be done to determine whether a commercially available brand and potential generic version share core attributes. Bioequivalence or biophysical equivalence must be present, showing that the two drugs release the same active ingredients into the bloodstream at the same amount, the same rate, and have the same quality. It means bioequivalence में अगर हमारी जो ड्रग इक्विवेलेंस है वो हमारी जो ड्रग्स है वो सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रोड्यूस करेगी, मतलब उसका जो ड्रग रिलीज हो रही होगी उसका अमाउंट भी सेम होगा, उसका रेट भी सेम होगा और उसकी क्वालिटी भी सेम होगी। तो फर्दर आई वुड लाइक टू कॉल ताहा तारिक। Assalamualaikum. My name is Taha Tarek, and my topic for discussions are drug disposition and pharmacokinetics. The term disposition is derived from the word dispose, that means to get rid of. It is the knowledge of the fate of a drug in a body after being administered. It involves all the steps starting from absorption, distribution, metabolism, and excretion. The term drug disposition further accumulates the information that what a drug is going to have effect on the body as long as it is available systemically. It marks its importance by sorting out the methods by which the drug is going to be getting disposed out of the body or how it will be eliminated from the body. But just before the elimination, the drug undergoes many processes like absorption, distribution, and metabolism. As these processes are not successive to each other, rather occur simultaneously, but in vitro studies can help it out making the steps one after another. To understand the drug disposition, there are two models to understand the drug absorption and distribution. The first one is one compartment model and the other is two compartment model. In the first one, we make two important assumptions. The first assumption is linear pharmacokinetics. By this, we mean that elimination is first order and that pharmacokinetic parameters are not affected by the amount of the dose. Of course, a change in dose will be reflected by a proportional change in plasma concentration. The second assumption we make is that the immediate distribution and equilibrium of the drug throughout the body. Considering these assumptions, we can easily describe the profile of a drug after an IV bolus injection. That is the same principle apply to other routes of administration as well. The second model is the two compartment model. Although these compartments do not necessarily have a physiological, the designations are compartment one is the central system. Okay. The second slide is pharmacokinetics. For a simple man with less knowledge of science of biology, a pharmacokinetics is a term used to determine what effects a drug produces when it is exposed in a body, or in further simple words, what a drug does on a body. Pharmacokinetics refers to the study of the time course that drug retains in a body and its duration in which it is exposed in a system. It also incorporates the process about the drug's absorption, distribution, metabolism, and excretion patterns. Pharmacokinetic is the mathematical description of the rates of these processes and the concentration time relationships. That's all from my side. Now I would like to call Reza Hasib to present her topics. Thank you.
Assalamu alaikum. My name is Zeda Hasib and my topics are liberation and absorption. Liberation is the first step in the process by which medication enters the body and liberates the active ingredient that has been administered. The pharmaceutical drug must separate from the vehicle or excipient that it was mixed with during manufacture. Now coming to absorption, drug absorption is a pharmacokinetic parameter that refers to the way a drug is absorbed from a pharmaceutical formulation into bloodstream. Drug is absorbed mostly via the cell membrane of the cell as its outer barrier of the cell. Drug has to cross this barrier, and to cross this barrier, there are several mechanisms like passive diffusion for water and lipid soluble drugs, facilitated diffusion, which is also known as the active transport, and endocytosis. Which mechanism is used by which drug? This is determined by the size, water solubility, and lipid solubility of the drug. Coming to the passive diffusion, it can be described as simply that the drug moves from a region of higher concentration to lower concentration, and the passive diffusion doesn't involve a carrier, and it is not saturable, and it slows a low structural specificity. Most drugs are absorbed by this mechanism. Water-soluble drugs penetrate the cell membrane through aqueous channels or pores, whereas the lipid-soluble drugs moves across the most biological membrane due to their solubility. Now coming to the facilitated diffusion, other agents can enter the cell through the specialized transmembrane carrier protein that facilitate the passage of large molecules. These carrier proteins undergo conformational changes, allowing the passage of drugs or endogenous molecules into the interior of the cells and moving them in the area of higher concentration to lower concentration. This process is known as facilitated diffusion. Heading on to the endocytosis, this type of absorption is used to transport the drug of exceptionally large size molecules across the cell membrane. प्लीज स्टॉप कीजिएगा. हम डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी से ये यहाँ पे फैक्टर्स की तरफ कैसे आ गए? मैम ये तो एब्जॉर्प्शन की टाइप्स है ना, मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन में क्या मैकेनिज्म है? बस इसको इतना डिटेल में नहीं जाना था आपको डेफिनेशन की हद तक रखना था. अभी हमने जो डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजीज आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर मेंशन थी, सिर्फ उसका जिक्र यहाँ पे करना था अभी. Okay, ma'am. Now I would like to further call Anam Naveed to continue the presentation. I am Anam Naveed. In my presentation, I will focus on distribution and metabolism. Distribution. It makes sense you don't need a definition for distribution. It going from one place to another. Let me elaborate further on. Once a drug has entered the vascular system, it becomes distributed throughout the various tissues and body fluids in a pattern that reflects the physiochemical nature of the drug and the ease with which it penetrates different membranes. पहले ड्रग ब्लड स्ट्रीम में एंटर होगी, उसके बाद ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी डिफरेंट टिश्यूज में. वेरियस टिश्यूज या बॉडी ऑर्गन्स जैसे कि अगर ब्रेन टारगेट है या हार्ट या फिर किडनी, तो वहां तक ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होती है डिफ्यूजन के थ्रू, विच मीन्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स एक जगह ड्रग की कंसंट्रेशन हाई है और दूसरी साइड ड्रग की कंसंट्रेशन लो है. सपोज हाई कंसंट्रेशन ब्लड में है ड्रग की और लो कंसंट्रेशन या फिर कोई कंसंट्रेशन ही नहीं है टिश्यू में, क्योंकि अभी ड्रग ब्लड में एंटर हुई है और टिश्यू में ड्रग की कंसंट्रेशन नहीं है. डिफ्यूजन का मतलब है ड्रग हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी. इट मीन्स ड्रग ब्लड से टिश्यूज में आ जाएगी और कंसंट्रेशन फिर टिश्यूज में हाई हो जाएगी. जब तक ये प्रोसेस होगा, जब तक एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाएगा. इक्विलिब्रियम मेंटेन जब होगा, जब एक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा दोनों कंसंट्रेशंस के दरमियान. लेट्स नाउ टर्न टू मेटाबॉलिज्म. दिस इज आल्सो नोन एज बायोट्रांसफॉर्मेशन. Metabolism describes the chemical reaction that change drugs into compounds which are easier to eliminate. The product of these chemical reactions are called metabolites.
जो भी ड्रग एडमिनिस्टर करी है वो पहले एब्जॉर्ब हुई, देन डिस्ट्रीब्यूट हुई और अब उसको मेटाबोलाइज होना है। मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन है, मीन्स जो ड्रग है वो केमिकली चेंज हो जाएगी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी। जैसे कि हम लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स लेते हैं या फिर नॉन पोलर कंपाउंड्स लेते हैं या फिर कोई नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स लिए हैं, वो बॉडी में इजीली एब्सॉर्ब हो जाती हैं क्योंकि वो मेम्ब्रेन से पास होती हैं और मेम्ब्रेन लिपिड बाइलियर होता है, इसलिए वो इजीली सॉल्युबल कर लेते हैं लिपिड ड्रग्स को। ड्रग्स को ज़रूरी है कि वो एक्सक्रीट आउट हो वरना वो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। मेन एम होता है मेटाबॉलिज्म का कि ड्रग की फॉर्म को चेंज करना एक्सक्रीशन के लिए। अगर ड्रग को एक्सक्रीट आउट करवाना है बॉडी से तो उसी फॉर्म में नहीं करवा सकते, हमें लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना होगा एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए। प्राइमरी साइट या मेजर साइट लीवर होता है मेटाबॉलिज्म की मैक्सिमम अमाउंट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। नाउ पुशरा विल टॉक अबाउट एक्सक्रीशन एंड रिस्पॉन्स। Assalamu alaikum. My name is Bushra Liaquat and I'm going to discuss here about the final step in ADME process, which is excretion. Excretion basically क्या है? Removal of drug, administered drug जो होती है. It consists of series of pathways that remove an administered drug and its metabolites from the body. जो हमारी एडमिनिस्टर्ड ड्रग होती है वो एक्सक्रीट आउट होती है, या तो वो ओरिजिनल फॉर्म में होती है या वो मेटाबोलाइट्स की फॉर्म में होती है। ये प्रोसेस कैसे होता है? ये मेटाबॉलिक बायोट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू होता है। मेटाबॉलिक बायोट्रांसफॉर्मेशन में हमारी जो ड्रग होती है वो केमिकली कन्वर्ट हो जाती है मेटाबोलाइट के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर। और ये मेटाबॉलिक बायोट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हमारे लिवर में प्लेस होता है। एक्सक्रीशन दो टाइप्स की होती है, रीनल और बाइलरी। रीनल एक्सक्रीशन में क्या होता है? हमारी जो ड्रग होती है वो एक्सक्रीट आउट होती है रीनल थ्रू किडनी। नॉन वॉलेटाइल ड्रग जो होती है हमारी वो एक्सक्रीट आउट होती है मेनली रीनल एक्सक्रीशन के थ्रू। इसमें क्या होता है? in which drug passes through kidney into a bladder and ultimately into the urine. Volatile drugs such as gaseous anesthetics, alcohols, these are excreted out via lungs in the form of expired gas. अदर पाथवेज यानी कि एक्सक्रीशन और जिन पाथवेज के थ्रू हो सकती है वो होते हैं सलाइवा, मिल्क, अदर बॉडी फ्लूइड्स